X-ray number 5, another very important chest X-ray. So without wasting our time, let's proceed. So what do you see in this chest X-ray? There are bilateral, multiple, rounded opacities. Bilateral, multiple, rounded opacities with cavitation in some opacities, with the absence of diaphragmatic silhouette as well as cardiac silhouette on the left side as well as on the right side. You cannot draw the diaphragm on the left side, you cannot draw the heart button on the left side, and you cannot draw the heart button on the right side, and you cannot draw the diaphragm on the right side. So this is the description for this chest X-ray. Bilateral, multiple, rounded opacities with air in some cavities, that is called cavitation, with air in some cavities, with positive diaphragmatic silhouette sign, positive cardiac silhouette sign on the left as well as on the right side. So what are the differential diagnoses for such X-ray? The differential diagnosis for such X-ray I will divide into 3: infection, inflammation, malignancy. इन्फेक्शन में हमारे पास सारे इन्फेक्शन आते हैं जो कि कैविटीज़ बनाती है, मल्टीपल ओपेसिटीज़ आपको देती है। तो उसमें स्टेफारियस हो गया, क्लेप्शियला हो गया, दीज आर द मोस्ट कॉमन। तो इन्फेक्शन में बैक्टीरियल हो गया, बैक्टीरियल में क्या हो गया, स्टेफारियस और क्लेप्शियला मोस्ट कॉमन। अदर भी करते हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। उसके बाद बैक्टीरिया के बाद फिर माइकोबैक्टीरियल है। तो माइकोबैक्टीरियल में आपके पास क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद आता है इन्फेक्शन की बात हम करें, फंगल इन्फेक्शन। तो एनी फंगल इन्फेक्शन कैन गिव यू बाइलेटरल मल्टीपल राउंडेड ओपेसिटीज विद कैविटेशन। तो ये हो गया इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, माइकोबैक्टीरियल, फंगल। उसके बाद आता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन कौन कौन से हैं, इन्फ्लेमेशन में मेनली वस्कुलाइटिस है। वस्कुलाइटिस जितने भी है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है बाइलेटरल मल्टीपल राउंडेड ओपेसिटीज़ की। वस्कुलाइटिस में मोस्ट कॉमन वेगनर्स ग्रेनुलोमाटोसिस आपने ज़रूर याद रखने हैं, बाकी याद हो या ना हो, लेकिन वेगनर्स जो है बाइलेटरल मल्टीपल राउंडेड ओपेसिटीज़ देते हैं विद सम कैविटेशन। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, तो उसमें आपके पास रियोमाटाइड आर्थराइटिस जो है वो इस तरह रियोमाटाइड नोडुल्स देता है। इसके अलावा सेप्टिक एम्बोलाई आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी सोचना है, सेप्टिक एम्बोलाई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और मैलिग्नेंसी में आपने प्राइमरी मैलिग्नेंसी और सेकेंडरी मैलिग्नेंसी। प्राइमरी मैलिग्नेंसी लंग की बजाते खुद हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि ये मास से फ्यूजन है या क्या चीज़ है, उससे जो है मेट्स हो सकते हैं बाइलेटरली। तो प्राइमरी मैलिग्नेंसी और मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी, तो कैननबाल्स भी जो है हम इनको बोल सकते हैं। तो मैलिग्नेंसी में आपकी प्राइमरी और सेकेंडरीज। तो प्राइमरी में आपकी प्राइमरी लंग मैलिग्नेंसी, लंग्स की जो है, उसके अलावा प्लूरा की जो है मेसोथेलियोमा, और थर्ड जो है आपकी मैलिग्नेंट लिम्फोमा आपने याद रखना है, स्क्वेमस आपने याद रखना है, और लंप इन द ब्रेस्ट। 3 एल्स आपने याद रखने हैं। एल ये मोस्ट कॉमन काज है मेटास्टेटिक लंग डिजीज़ के। लंग कैंसर बताते खुद, वो मोस्ट कॉमन है। सेकंड लंप इन द ब्रेस्ट, और थर्ड लिम्फोमा। तो ये इस तरह के प्रेजेंटेशन आपको दे सकती है। So this is chest X-ray number 6. What do you see in this chest X-ray? You can see over here there are some cystic changes. And what is this? This is hairpin. And it is lying, this is trachea, this is right bronchus. It is lying in the right main bronchus with cystic changes over here. This patient presented with fever, productive cough for the last 4 to 5 months. And this was missed. This was actually a case of foreign body followed by focal bronchiectasis. So bronchoscopy was done and that was removed. So this was the case of foreign body in the right main bronchus with post-obstructive lung damage. That was X-ray number 6. What do you see in this chest X-ray?
So you can see over here there are the leads. These leads are actually the ECG leads, or you can say cardiac monitor leads. So it gives you an idea that this is an AP view and the patient is very sick. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है this thing, this. So इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि this is a very sick patient, most likely in ICU, and this is AP view. So what is the striking abnormality? You can see over here, this is lung, ये lung पड़ा हुआ है. So there is hyperlucent rim on the right side with absent bronchovascular marking in the upper, middle and lower zone. With this is the margin of collapsed lung. With the margin of collapsed lung can be seen with opacification in the right as well as in the left lung, bilateral opacification in the right as well as on the left lung. With ये क्या चीज़ है? This is called a deep sulcus sign. This is a sign of tension pneumothorax in supine position or in those patients who are on ventilator or by PEP, positive pressure ventilation. उसमें यूजुअली mediastinal शिफ्ट नहीं होता, उसमें deep sulcus sign होता है. यहाँ पे सारा एयर नीचे पुश होता है. So this is called a deep sulcus sign. So this is a right side a tension pneumothorax with bilateral disease lung. So what can be differential about that? So bilateral consolidation. जितने भी causes है सारे डाल दो. Infection, inflammation, malignancy सारे डाल दो. Most common जो है COVID. This was the patient of COVID with bilateral consolidation. That was X-ray number 7. Now this is X-ray number 8. So what do you see in this chest X-ray? So you can see the striking abnormality over here and over here. There is bilateral opacification in periphery. This is called negative photograph of pulmonary edema. ये सवाल एग्जाम में पूछते हैं कि what is the negative photograph of pulmonary edema? So this is bilateral peripheral opacification with sparing of the central zone, relatively sparing. You can see over here also some reticulation, but the striking abnormality in this chest X-ray is bilateral opacification in periphery of the lung. So that is called negative photograph of pulmonary edema. What are the differential diagnoses for such X-ray? COVID on the top because causes bilateral peripheral. Second is eosinophilic pneumonia, especially chronic eosinophilic pneumonia. Third, vasculitis. वेगनर्स करता है तो पेरिफेरी में जो करते हैं तो वस्कुलाइटिस आपने दिमाग में रखना है. ड्रग इंड्यूस्ड पेरिफेरी में करता है तो ये सारे जो है आपने माइंड में फिर रखने हैं. ऑन द टॉप, सो दिस वाज द एक्सरे ऑफ कोविड पेशेंट.